Many times we got up this week and we realized that the markets will move in one way, but it moved quite the other. There were almost like two flash crashes, one on the Nifty and one in the Dow Jones. Severe crash, severe fall. Now, many reasons could be attributed to the same, but if I look at the charts and the patterns properly, then one more similar crash can happen. A sudden few hours continuous severe downfall that can happen in the near future. Looking at the week ahead, it's going to be another sensational one, and the way the expiry is going to happen is going to be much more different from any of you all anticipate. So this is going to be another tumultuous week and very interesting. The expiry and the levels at which we are headed from here are going to be extremely interesting. Now, many stocks have also corrected, like the metals, because of the new fears now of a general recession across the world, and in the US in particular, in the backdrop of rising interest rates. Now, how long this can sustain, whether there is going to be another school of thought that is going to come, is going to be important. Also, don't forget that there is going to be new data that is going to emanate out of the US, the CPI and the PPI, and that's going to rattle markets if they don't turn out to be satisfactory. There is also another school of thought that if they turn out to be a little better, then that can lead to lowered expectations of interest rate hikes. Anyway, I am a person who takes one stand, as you all know. I believe it's going to be interesting. There could be many days of continuous downfalls, continuous rises, and that's going to be the characteristic of this next few days, fortnight. And one would need to understand which are those days and which are those periods when this can happen. So to get to know more, please do join my Premium or Premium Plus. Number to get in touch is 9820861044. Then you give you more detail about where we are headed. But definitely, I can tell you one thing, that where the last week I was saying that few hours and periods could be like this, here that you may find some few days could be continuous down or rise, and that can lead to manifold opportunities as well. ओके तो भाई और बहनों, ये हफ्ते को अगर आगे देखें तो काफ़ी दिक्कत सडन आ सकती है। और जो लास्ट वीक दो फ्लैश क्रैश दिखाई दिए निफ्टी और सेंसेक्स में तो दिखाई था, लेकिन डाउ जोन्स कंटिन्यूस कई घंटे गिरते रहे। ऐसा फिर एक रिपीट पैटर्न होने वाला है इस हफ्ते। 10 दिन की जो बात है, कई दिन ऊपर कई दिन नीचे, और उसको आपने सिलेक्ट नहीं किए तो रात को कुछ सोचेंगे और हो कुछ और जाएगा दूसरे, तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो ये सेंसेशनल रहेगा एक्सपायरी, काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो सकता है अगर आप समझ नहीं पाए कहाँ ये ऊपर जा रहा है या नीचे उस दिन, और उनके आगे पीछे जो दिन रहेंगे कैसे। ठीक है, तो संपर्क करेंगे 9820861044। लेकिन लास्ट वीक और उसके पहले मैंने आपको कई बार कहे कि ऐसे पीरियड्स आएंगे जो कंटिन्यूस राइज या कंटिन्यूस फॉल, कुछ घंटे ऐसे रहेंगे। अब ऐसे कंटिन्यूस डेज भी होने की संभावना है। ठीक है, तो उसमें तो बहुत, अगर आप रॉन्ग साइड में रहे तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रिकवरी भी इतनी आसानी नहीं होगी। समझिए गिर रहा है तो गिरते ही रहेगा सारा दिन या काफ़ी दिन। तो सारा दिन का मतलब ये नहीं फिर लोग पकड़ के ट्रोलर आके खड़े हो जाएंगे मेरे पीछे। बहुत पहले, 3 साल से पीछे बहुत पड़े हैं, और फिर आप ट्रोलर सर आ जाएंगे। मतलब ये है कि सब्सटैंशियल पीरियड्स डाउन या सब्सटैंशियल पीरियड्स राइज। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर मिनट फिर बोलेंगे हर मिनट सर 2 मिनट बढ़ गया मार्केट, ऐसे भी लोग खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ज्वाइन करेंगे। अगर आप राइट साइड में रहे तो अच्छे मुनाफे का हो सकते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी लॉस हो सकता है। संभाल के चलना है। बहुत खतरनाक वीक है, ये मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, ये बहुत खतरनाक वीक रहेगा। ठीक है, और संपर्क करने का नंबर 9820861044। जय हिंद, जय भारत।